हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप हेल्थ नर्सिंग क्लास 7 आम डिस्कसन करवा विथ एक्सप्लेनेशन सहित आप 1 ରୁ 6 क्लास यदि देखी ना तो चैनल माध्यम आप निश्चित देखिपारे। तो क्वेश्चन आंसर आरंभ करवा जोटा कि आप OSSC ESI एग्जाम ता सहित नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हेल्प हो। क्वेश्चन नंबर 1, a 2-year-old child is admitted to hospital with a diagnosis of pneumonia. Which of the following signs which indicate respiratory distress in the child? को साइनटा लक्षणटा देखा जाए जो गोटे चिल्ड्रेन को निमोनिया होता है को लक्षणटा आप देखा जाए श्वासक्रिया नाजल फ्लारिंग रिट्रैक्शन ग्रुंटिंग ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है जो आप ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव आप करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी। आउ जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये आप डायग्नोसिस चिल्ड्रेन कैन मैनिफेस्ट डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग द नाजल फ्लारिंग नाक जलिबा ता सहित रिट्रैक्शन श्वासक्रिया नबर आप असुविधा having the difficulty in breathing. The sign indicate that the child is having difficult breathing. तो श्वासक्रिया नेबार ताकू असुविधा होता है यही सब लक्षण साइन इंडिकेट होता है जिते आपंक निमोनिया आप डायग्नोसिस होता है। तो ये सब आप एक्सप्लेनेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए 6 month old infant is brought to the clinic with a fever of 38.5 degrees Celsius. Which of the following action should the nurse take first? को एक्शनटा आपंक नर्स फास्ट करें। तो ये लिखाई आपंक परफॉर्म द फिजिकल असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट आंसर हो परफॉर्म द फिजिकल असेसमेंट करेक्ट आंसर आप व्हेन द चाइल्ड प्रेजेंट विथ ए फेवर नर्स शुड फास्ट परफॉर्म ए फिजिकल असेसमेंट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द फेवर टू चेक फॉर द एनी साइन ऑफ डिस्ट्रेस। तो डिटरमाइन टाकू निर्धारण करने कि आपण फिजिकल असेसमेंट टाकू सी नहीं थे आ फेवर टाकू चेक करते एनी साइन डिस्ट्रेस करने। तो यहाँ आपन प्रथम काम होता है नर्स परफॉर्म द फिजिकल असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ए 4-year-old child is diagnosed with acute lymphoblast leukemia जोटा कि आपनकर lymphoblast leukemia जोटा कैंसर गोटे साइन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट? एडमिनिस्टरिंग द केमोथेरापी ये पचार प्रथम केमोथेरापी दि जाए। प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड एंड फैमिली। मॉनिटरिंग ऑफ द साइन ऑफ इन्फेक्शन। एनकरेजिंग द चाइल्ड टू ईट हाई कैलोरी डाइट। तो ये मॉनिटरिंग द साइन ऑफ इन्फेक्शन आगे मॉनिटर करा जाए साइनटा कौ प्रकार होता है लक्षणटा ताको मॉनिटर करा जाए। तो प्रथम ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट आंसर हो मॉनिटरिंग द साइन ऑफ इन्फेक्शन सी। Children with all are at high risk of infection due to their compromised immune system. Monitoring for the sign of infection such as fever, chills, and changes in behavior in critical during the initial phase of treatment. जोटा एक्सप्लेनेशन दे। क्वेश्चन नंबर 4, ए 3 years old child is admitted to the hospital with a diagnosis of dehydration. Which of the following signs would indicate that the child is improving? Increase urine output, decrease in urine output, increase thirst, decrease thirst। तो करेक्ट आंसर है जो इंक्रीज यूरिन आउटपुट ऑप्शन नंबर ए आपन करेक्ट आंसर है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट इज साइन दैट चाइल्ड इज डिहाइड्रेशन ऑफ द इम्प्रूविंग। ये आपन साइन होता है जोटा कि यूरिन टू डिहाइड्रेशन टू इम्प्रूव करने। क्वेश्चन नंबर 5, a 5-year-old child is diagnosed with asthma. Which of the following nursing intervention is most important during the acute asthma attack? Administering oxygen, providing the emotional support to the child and family, monitoring the child peak flow, encouraging the child to use their inhaler. Administering the oxygen फास्ट कौन होता है इंटरवेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कौन एडमिनिस्टरिंग द ऑक्सीजन asthma है। Administering the oxygen is critical during an acute asthma attack to help increase oxygenation of the body. ऑक्सीजनेशन बॉडी होता है जो आपको श्वासक्रिया नबर असुविधा होता है इनहेलर आपंक नि जाए। तो इनहेलर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन कि बॉडी से ऑक्सीजन फास्ट आप एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करा जाए तापर क्रिटिकल ड्यूरिंग द एक्यूट एस्थमा अटैक टू हेल्प इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी। At what age do children typically start to walk independently? को एज रे आपण को चिल्ड्रेनटा इंडिपेंडेंटली स्वाधीनता भाव में चली पारि थाए।
नौ रु 12 मास भितर ना 12 रु 14 मास भितर ना 14 रु 16 मास भितर ना 16 रु 18 मास भितर। तो करेक्ट आंसर जो 12 रु 14 मंथ भितर आपणकर मास भितर चेष्टा इंडिपेंडेंटली चली पारे। मोस्ट चिल्ड्रेन स्टार्ट टू वर्क इंडिपेंडेंटली बिटवीन द 12 to 14 months of the age जोटा कि आप एक्सप्लेनेशन दे। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इनफैक्ट्स। तो गुण पचार ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस शिशुर तार को डेवलपमेंट समय से ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कर पारे इमिटेशन सिंबॉलिक थिंकिंग प्रोब्लेम सॉल्विंग। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस टा आपन करेक्ट आंसर हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनफैक्ट ऑब्जेक्ट को प्रथमे परफॉर्मेंस करथाय परफॉर्मेंस सॉरी object permanence is the understanding that object continue to exist even when they are out of the sight which is the characteristic of cognitive development in infants जोटा कि explanation देछि आपन। At what age do children typically start to use the language to communicate? को एज रे children language to communicate करथाय आपनकर 6 to 9 months 9 to 12 month 12 to 18 month and 18 to 24 month। तो 12 to 18 month आपन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट टू यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बिटवीन द 12 to 18 month of the age। तो ऑप्शन नंबर सी आपन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन द टोडलर्स। सेपारेशन एंजाइटी स्ट्रेंजर एंजाइटी आपणकर इमोशनल रेगुलेशन एम्पैथी। तो करेक्ट आंसर जो सेपारेशन एंजाइटी जोटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेपारेशन एंजाइटी is the common characteristic of social emotional development in the toddlers where they become distressed when they separated from the primary caregivers। Question number 5 at what age the children typically start to show and understanding the cooperative play 2 to 3 years 3 to 4 years 4 to 5 years 5 to 6 years। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन कि को एज रे कौन चिल्ड्रेन रो एक्टिविटीज रही थे। तो आपको ये क्वेश्चन की आगे देखा मिले एग्जाम 4 to 5 years आप करेक्ट आंसर हो आर ऑप्शन नंबर सी जो थी कि आप कौन कोऑपरेटिव प्लेस अंडरस्टैंडिंग। Most children start to show and the understanding the cooperative play between the 4 to 5 years age where they are begin to take turns and work together with others। At what age do children typically start to show and understanding the object category? Object category को केतବେଳେ ଚିହ୍ନିବା से start करते अंडरस्टैंडिंग करिया start करते 6 to 9 months 9 to 12 months 12 to 18 month 18 to 24 month। तो 12 to 18 month भितर which of the following is characteristic language development of the preschoolers? Using the gesture to communicate, pointing to body parts, using the simple sentences, understanding the complex stories, using the simple sentence जोटा कि आपनकर करेक्ट आंसर रहिबो। preschoolers typically start to use the simple sentence to communicate such as mama go ए सब आपनकर कोन छुआ मन को कुआ जाय छुआ माने एंती ताकू ऑब्जेक्ट जो आपन लिसन करती से छुआ मैंने से आपा आपे पार्टी बाहरी थाए। तो ये सबू से माने प्रथम वर्ड जो सिंपल सेंटेंस को यूज करके लैंग्वेज को कम्युनिकेट करा सहित। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रेन टिपिकली स्टार्ट टू शोन एंड अंडरस्टैंड द सोशल रूल्स 2 to 3 years 2 to 4 years 4 to 5 years 5 to 6 years 4 to 5 years अपन social rules typically start understand। Most children start to show and understand the social rules between the 4 to 5 years age such as talking turns to sharing toys। Question 9 which of the following characteristics of the cognitive development school age children using the logical reasoning solving the complex math problems understanding the abstract concept। तो all of the above correct answer is all of the above using logical reasoning solving the complex math problem understanding the abstract concept all of the above is the correct answer आपन। At what age children typically start to show and understand the empathy 2 to 3 years 3 to 4 years 4 to 5 years 5 to 6 years 4 to 5 years आपन correct answer option number C।
Which of the following is the characteristic of the physical development in fact? Sitting up without support, जोटा एटा following characteristic physical development in fact, जोटा sitting up without support, बिना support रे आपण sitting करि पारंत शिशु, crawling, walking independently, pointing to the body. तो sitting up without support जोटा कि physical development जोटा impact रही था शिशु मानकर, एटा भी को एज रे होइते तार भी अछि आपनकर इनफैक्ट टिपिकल डेवलपमेंट 6 to 7 मंथ ऑफ एज जोटा कि चिल्ड्रन मध्ये को देखा जाइथे सपोर्ट बिटवीन विदाउट सपोर्ट माध्यम से माने बसी पारथांदी सिटिंग करि पारथांदी. At what age do children typically start to show and understanding the conservation? 4 to 5 year, 5 to 6 year, 6 to 7 year, आपन 7 to 8 year, 6 to 7 years आपन करेक्ट आंसर है. Children typically develop the understand of conservation, which is the ability to understand that certain properties of object remain the same despite changes in appearance between the 6 to 7 years of age. Which of the following is characteristic of the social emotional development toddlers? Separation anxiety, stranger anxiety, emotional regulation, all of the above. All of the above अपना correct answer है. At what age the children typically start to show understand of time concept? Time concept रो केतବେଳେ से अंडरस्टैंड करथान 3 to 4 years, 4 to 5 years, 5 to 6 years, 6 to 7 years. तो 5 to 6 years टाइम्स concept से अंडरस्टैंड करथांती. Children typically develop as understanding the time concept such as day of the week and month of the year between the 5 to 6 year of age. Question number 15. Which of the following characteristics of the cognitive development in the preschoolers? Using the symbol of represent object, understanding the cause and effect relationship, solving the complex math problem, reading and writing. Using the symbol of represent object. Option number A आपन को करेक्ट आंसर होइबो. तो ये सब आपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला आपनकर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी टॉपिक रो आपनकर चाइल्ड को बॉयस रे आपनकर कोन एक्टिविटीज करथे कोन सब करिथे तार